Hello friends, today I am here with a very short MCQ test on Song of the Open Road written by Walt Whitman. This poem tells us about the poet's inner desire to enjoy life to its fullest without bothering about tensions and worries. I have already explained the poem before. उस वीडियो की लिंक ऊपर स्क्रीन पर अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट on Song of the Open Road. Read the questions carefully and choose the correct alternative. Question number 1. The poem Song of the Open Road is taken from Walt Whitman's famous literary work. A. Oh Captain, My Captain. B. Leaves of Grass. 3. Poems. D. None of the above. Next. By old delicious burdens, the poet means A. The luggage. B. The food he carries. C. The stress he bears during the travels. And D. Sweet memories of the past. Next. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Identify the figure of speech in the given sentence. Option number A. Simile. B. Metaphor. C. Repetition. And D. Antithesis. Next. Fourth. Describe the mood of the speaker in the poem. पोएट का मूड कैसे है इस पोएम में आपको आइडेंटिफाई करना है। ए. रिग्रेटफुल. बी. सैड. सी. पेसिमिस्टिक. एंड डी. चीयरफुल. नेक्स्ट. फिफ्थ. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पाथ इन द फर्स्ट स्टांजा? ए. रेड पाथ. बी. पिंक पाथ. सी. ब्राउन पाथ. एंड डी. ग्रीन पाथ. So for all these questions, read the poem very carefully and then you can easily solve all the questions. Next. Song of the Open Road. So in this sentence, this is the title of the poem. Identify the figure of speech in the given sentence. इस टाइटल में भी एक figure of speech है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। A. Personification. B. Climax. C. Repetition. And D. None of the above. Seventh. Give the meaning of suffice. A. Limited. B. Enough. C. Complaining. And D. Hereafter. Next. The long brown path before me, leading wherever I choose. Now, identify the figure of speech in the given sentence. A. Paradox. B. Alliteration. C. Tautology. And D. None of the above. तो आपको एक बात ध्यान में आई होगी यहाँ पे कि इस पोएम के आंसर्स लिखने के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है, जो ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सारे आंसर्स आसानी से आ जाए। आपको पोएम बहुत ही केयरफुली रीड करनी है। रीड करने के बाद सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए ताकि टेस्ट सॉल्व करने में आपको आसानी हो और सारी पोएम समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पोएम अच्छे से पढ़िएगा, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप इस टेस्ट अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट. 9th. I am filled with them and I will fill them in return. Now identify the figure of speech in this sentence. A. Repetition. B. Climax. C. Hyperbole. And D. Metaphor. Next. What do you think the poet means by I myself am good fortune? तो ये जो लाइन इस पोएम में आई है I myself am good fortune, इस लाइन में पोएट को क्या कहना है? ऑप्शन नंबर A. He wants the favor of the destiny. B. He believes in destiny. C. He does not want anything else. He is satisfied with all he has. And D. None of the above. Next. What does they refer to in the below lines? I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. तो इस लाइन में जो they word यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर A. Constellations. B. Libraries. C. Good fortune. And D. Complaints. तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा आंसर है, अच्छे से पढ़िएगा पोएम। नेक्स्ट. Strong and content, I travel the open road. Now identify the figure of speech in the given sentence. A. Paradox. B. Simile. C. Climax. And D. Inversion. तो आपको inversion, climax, paradox क्या होता है इसका मीनिंग पहले ही पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट. What according to you are the trait that the poet exhibits through the following line? ये जो लाइन मैं आगे पढ़ूंगा उस लाइन में पोएट अपने कौन सी ट्रेट, पर्सनैलिटी का ट्रेट दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है। हमें उनकी कौन सी क्वालिटी पता चलती है ये लाइन पढ़ने के बाद, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। Then the line is henceforth I ask no good fortune, I myself am good fortune. A. Self confidence. B. Overconfidence. C. Low confidence. And D.
none of the above. Next, the poem is written in, ये poem कौन से form में लिखी गई है? A. heroic couplet, B. free verse, C. rhymed verse, and D. none of the above. आपको identify करना है. Next, what is the central theme of the poem? The most important question, what is the central theme of the poem? Central theme क्या है इस poem की? A. the poem tells us to believe in destiny. B. the poem tells us about the importance of freedom, joy of free life, and optimism. Optimism मतलब क्या? Positivity, positive attitude. आशावादी जिसको होना ऐसे बोलते हैं. C. the poem tells us about the dark side of human life. And the last option D is the poem tells us to remain calm and quiet in life. So in this way the test is over. इस poem का वीडियो आप जरूर देखिए. अगर आपको ये टेस्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. Thank you very much.